Okay, good to start. Good evening, everyone. Welcome from SNIC Rehab Foundation and myself, Harshali Kharche. I'm the Managing Director and a founder of SNIC Rehab Foundation. Above all, I am a parent also of the two beautiful kids on spectrum. And I can relate to you very well in some areas. And SNIC welcomes you today in a very important topic for the sexual and developmental disabilities. I'll brief you about SNIC slightly. Like SNIC is Special Needs Integration Center, and Rehab stands for Rehabilitation, Empowerment, Health, Advocacy, and Belief. Here our vision is to empower parents of children with special needs by ensuring their peace of mind, satisfaction, and positivity with respect to their child's overall development. And we are here to sensitize, educate the society about the challenges faced by special needs parents. This is our mission, to provide the appropriate perspective about the treatments, therapies, and approaches in favor of child's development. Also to bring better clarity about myths, beliefs, and misunderstanding with regard to issues, disorders, and dysfunctions. So with this motto and the vision, we are working on various areas. SNIC is working on various areas that are like, we are running various awareness programs. We are doing various power empowerment sessions. We are organizing various activities to empower special needs children, also in terms of camps and learning sessions. We have knowledge sessions on financial advisory, advocacy, and most important thing is mental health of parents and physical health of parents, and also inclusive education. So many more projects are in the pipeline, but today we are here for the discussion for the kids issues. Like there are many taboos on this topic, so everybody is not very comfortable talking about this topic, but I want to break that taboo. And Dr. Sir came up with very beautiful topic for us today. For that, we have with us Dr. Avinash Sousa, sir. He is a consultant psychiatrist and psychotherapist, and president of Bombay Psychiatric Society. He is also founder and a trustee of Sousa Foundation Trust that works in the area of mental health awareness. I would like to hand over to Dr. Avinash, sir, for the further session. Well, good evening, everyone. And I will, of course, speak a little in English and a little in Hindi so that I think all parents totally understand why we're here today. Today's topic, that is sexuality and developmental disabilities, is a very important topic, but a neglected one. जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनकी सेक्सुअल भावनाओं के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में बात करें, खुल के बात करें, ताकि हमारे मन में बहुत सारी विचार होती है लेकिन हम व्यक्त नहीं कर पाते. एक हिचकिचाहट होती है. There's a bit of a reluctance to talk about these issues, so we want to discuss a few of them today. I know the time is never going to be enough to discuss all these issues, but we'll try and highlight some of them. समय कम है, जितना भी हम हो सकते डिस्कस करेंगे. फिर if of course the need arises, we may have a second round some months later, to discuss some more issues. So to start with, the first question that a lot of parents ask me is, how do these children actually have sexual issues? And do sexual problems come up in them? Is sexuality a problem in them? Does it actually happen? कई पेरेंट्स पूछते हैं, हमारे बच्चे स्पेशल है, उनकी बुद्धि कम है, उनकी सोच इतनी नहीं है, तो क्या उनमें ये सेक्सुअल भावनाएं आ सकती है? The simple answer is they have a body. They have a body which is developing like your and mine. They have hormones which are developing. They have a physical structure which is developing. So sexual feelings could come up biologically, though they may not understand what these feelings are. हमारे बच्चों के पास शरीर है जिसका विकास हो रहा है, शरीर में hormones है, शरीर के अलग अलग अंग है जिसका विकास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल भावनाएं उत्पादित होगी.
लेकिन उन भावनाओं को ठीक तरह से व्यक्त करना, समझना शायद उनके क्षेत्र के बाहर हो, लेकिन ये भावनाएं जरूर उनमें आती है. Now, it's important to also realize that what we think as sexual may not always be sexual for the child. हम जो चीज को सेक्सुअल मानते हैं, हो सकता है बच्चा उसे सेक्सुअल तरीके से नहीं देखे, उसे संभोगिक तरीके से, सेक्सुअल तरीके से नहीं देखे. What do we mean by sexual problems? These generally come up after the age of 10 or 11 as the child grows. 10-11 साल उम्र के बाद ये आती है. We see a number of children who might touch their private parts, rub their private parts. We may see a number of children who like to remain without clothes. We may see children who go and hug members of the opposite gender, who will, go and kiss a neighboring auntie, and those kind of things, or they get attracted to something on TV. Today in an online era, they may sometimes see some sexual videos online. So these kind of things very often happen. जो स्पेशल बच्चे हैं, कभी कभी वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाते हैं, उनके साथ खेलते हैं. कभी कभी ये भी होता है कि किसी और को देखकर अजीब तरीके से हंसेंगे. अगर घर पे मेहमान आए उनसे गले मिलेंगे, उनको चूम लेंगे. ये सब चीजें भी होती है. कभी कभी ये भी होता है कि टीवी पे कुछ सीन्स देखकर खुश हो जाते हैं. कभी ये भी होगा कि समझो कुछ उनका बिहेवियर में ऐसा होगा कि वो कपड़े के बिना घूमना पसंद करेंगे, या कभी कभी जोर से झप्पी किसी के ले लेंगे. सो दीज आर थिंग्स व्हिच फॉर्म द होल सेक्सुअल कंपोनेंट दैट कम्स इनटू देम. Of course, apart from this, there may also be behaviors where they only smile at ladies that they see, or girls may smile at gents that they see. तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ लेडीज या जेंट्स को देखकर वो हंसे, अजीब तरीके से उनको देखे. कुछ छूने का काम नहीं हो. They may not touch anyone, but these are also sexual feelings and sometimes attractions that they develop. You may also at times find that you walk into the room and your child is playing with his private parts and masturbating, and this is something which can happen. कभी कभी ये भी होता है कि आप रूम में जाए और देखें कि बच्चा प्राइवेट पार्ट से खेल रहा है, हस्तमेतु यानी मैस्टरबेशन कर रहा है. These are very normal behaviors that you often see, and it's very important that you don't react to this negatively. इसको नेगेटिव तरीके से इस पे रिएक्ट करना, बच्चे को मारना, गुस्सा करना, चिल्लाना गलत होगा. So we shouldn't react by hitting the child, getting upset with the child. We have to realize that these are processes which are parts of normal development of the child. बच्चे के normal development में ये सब चीजें होगी. It can also happen that the child may like to roam about without clothes, and at that time again we can't get angry or get upset with the child. Rather, he has to be managed in a manner so that these issues can be curtailed. जब लड़कियों की बात आती है, when it comes to girls, sometimes they may have issues related to the menstrual cycle, related to the periods, managing of the periods, which can often become difficult. जब हम बच्चियों को देखते हैं तो महीना संभालने में, मासिक पाली संभालने में उनको तकलीफ होगी, और पीरियड्स में अपना खुद का ध्यान रखना, महीने के दौरान ध्यान रखना मुश्किल होगा. ये चीजें भी हम काफी बार देखते हैं. तो ये सारी चीजें जो है हमारी sexual problems के अंतर्गत आती है. A lot of people ask me, how are we supposed to react to all this? ये सबको देखकर हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे हमारा बर्ताव रहना चाहिए. It's very important that we react normally. Do not make the child, whether boy or girl, feel there is something shameful or hurtful about what is happening. बच्चे को हम ये कभी भी महसूस नहीं होने दे कि वो जो कर रहे हैं वो शर्मनाक है, या सही नहीं है, या गलत है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ साथ में ये भी जरूरी है कि हम बच्चे को ये भी समझाए कि ये सब चीजों की एक जगह होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सप्लेन टू द चाइल्ड दैट इफ ही wants to probably remain a little without clothes, or even probably touch the private areas, it has to be done in the bathroom when he's alone. It has, or she's alone. It has to be done when there's no one around. It can't be done in the hall. It can't be done in the kitchen. It can't be done in public spaces. तो बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि अगर ये सब चीजें उनको करना है, खुद को छूना या कपड़ों के बिना कभी रहना, तो ये घर के कोई भी कमरे में नहीं हो सकता है. वो बाथरूम में अकेले हो सकता है, नहाते समय हो सकता है. सो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान उनको समझाना बहुत जरूरी है.
We all know special children take time to learn, so we may have to explain to them multiple times. उनको कई बार समझाना पड़ेगा ताकि उनकी बात समझे. It may not happen that they are able to register all this at once. The very basic aspect that we do and we teach every special child is about touch. हम बच्चों को खास करके सिखाते हैं छूने के बारे में. उन्हें कैसे छूना चाहिए और कैसे नहीं छूना चाहिए. How they should engage in good touch rather than bad touch. It's very important that we explain to adolescent boys and girls that they are not supposed to touch anyone else at certain parts of the body. They are not supposed to touch on the lips, on the chest. They are not supposed to touch between the legs or on the bum area. So there are things that we have to explain to special children, that you cannot touch people on the lips, on the chest, between the legs or in the bum area, and no one should touch you there either. बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि शरीर के 4 भाग ऐसे हैं जहां कोई आपको न छुए और आप किसी को नहीं छुओगे. और ये जो 4 भाग है वो है आपके होठ, आपका छाती, पैरों के बीच में और आपका पीछे का भाग. यहाँ पे कोई आपको नहीं छूना चाहिए. You also have to explain to children that if anyone touches you here, you're supposed to come and report to an elder. बच्चों को ये भी समझाना है कि अगर आपको कोई यहाँ पे छुए तो आकर आपको दूसरे लोगों को बताना है, हमें बताना है कि ये हुआ है. Another question which very often I get and a lot of people speak to me and ask me is, do you think my special child can get married? Do you think he can lead a normal life? Do you think he'll have a husband, he'll have a wife? She'll have a husband, he'll have a wife? मुझसे कई लोग पूछते क्या मेरे स्पेशल बच्चे की शादी होगी, मेरी बेटी का पति होगा, मेरे बेटे का पत्नी होगा, क्या उनका विवाहित जीवन सुखी होगा? This is a very highly individual decision, and I think we cannot take this decision for every child as a rule. It varies child to child, family to family, situation to situation. ये जो एक समस्या है, इसका हल व्यक्तिगत है. हम हर इंसान, हर परिवार के लिए इसका हल अलग से ढूंढते हैं. परिवार में कितने लोग हैं, सदस्य हैं, कितने लोग उनको मदद करने के लिए है, क्या हमें सही तरह का परिवार मिल रहा है जहां बच्चा जा रहा है. बहुत सारी चीजें हैं जो देखकर, सोचकर, समझकर हम ये निर्णय लेते हैं. हम ये नहीं कहते कि बच्चे की शादी मत कराओ, हम ये नहीं कहते कि बच्चे की शादी कराओ. ये मौके जब भी आएंगे हमें बहुत सोच समझकर तभी उस समय पे निर्णय लेना है. We never advocate that the child should never get married. We never advocate that the child should get married. But at the same time, if such opportunities arise, the decision has to be taken in a highly individualized manner based on every family and their situation. It cannot really be taken as a blanket rule. Another thing which very often I am asked is that my child has sexual needs, whether boy or a girl, and they are not fulfilled. Do you think that frustration leads to anger, aggression, and various kinds of behaviors? मुझसे कई बार पूछा जाता है कि मेरे बच्चे के शारीरिक जिस्मानिक जरूरतें हैं और अगर वो पूरी नहीं होती है तो क्या उनमें गुस्सा, अलग तरह के हम behavior problems देखते हैं. The answer is yes and no. There are some children who do show aggression. There are some children who do show stubbornness. There are some children who do get violent. But it may not always be sexual in nature. कुछ बच्चे हैं जो गुस्सा होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो जिद्दी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाथापाई पे उतर आते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जिस्मानिक जरूरत पूरे नहीं होने के कारण हो. It's also important to understand that parents also ask me, should these needs be fulfilled? It's a very difficult question to answer. मुझे पूछते हैं लोग कि क्या ये जो जरूरतें हैं हमें कहीं तरह से, किस तरह से पूरी करनी चाहिए. ये बहुत मुश्किल सवाल है और मैं हमेशा माँ बाप को ये कहता हूँ कि प्रकृति ने, नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है कि ये जरूरतें पूरी हो सकती हैं. So children do engage in self stimulation, masturbation. बच्चे जो है खुद को सहलाते हैं, हस्तमेतु में प्रयोग करते हैं और कई बार इन चीजों से इसका हल निकल सकता है. You don't necessarily need a partner to fulfill these needs. जरूरी नहीं है कि उन्हें किसी की सहायता की जरूरत हो
इन चीजों को पूरी करने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कमिंग टू गर्ल्स, आई एम वेरी ऑफन आस्क्ड दैट माय डॉटर इज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड and is not able to manage her periods. Should she undergo a hysterectomy? मुझसे पूछा जाता है कि मेरे should her uterus be removed? कि मेरी बच्ची है, उसे महीना संभालने में तकलीफ होता है, खून अधिक बहता है, वो पैड बराबर नहीं लगा पाती है, तो क्या उसकी थैली का ऑपरेशन होना चाहिए? क्या हम थैली का ऑपरेशन कराएं? ये बहुत जरूरी बात है समझना कि थैली का ऑपरेशन ऐसे ही नहीं होता, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनमें शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। तो हम थैली का ऑपरेशन करके उसके शारीरिक विकास को रोके, ये गलत होगा। बट कई बार ऐसे होता है कि कुछ बच्चे हैं जहां 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनका खून बहना होता है, उनका महीना खुद संभालना नहीं होता, उसके कारण वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनमें कई बार गायनेक डॉक्टर जो है डिसीजन लेते हैं। देयर आर सम चिल्ड्रन हु हैव अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग पीरियड्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग their menstrual cycle, and in such cases it's the gynecologist that decides whether there is a need for the removal of the uterus, along with a psychiatrist who may just suggest, but it's not a rule. ये एक कायदा नहीं है कि आपको थैली निकालना है, it's not a rule. There is a misconception कि if you remove the uterus and something sexual happens with the child, she will not get pregnant. लोगों के मन में ये एक गलत फहमी है कि अगर हम थैली का ऑपरेशन कर दें और कल बच्ची के साथ कोई शोषण हो तो हो सकता है वो गर्भवती नहीं बने, तो ये एक हमारे लिए सुरक्षित चीज है। बट दिस इज अ रॉन्ग नोशन. We should not really advocate this, and I believe hysterectomy should not be done unless it's very very necessary. इसीलिए हम थैली का ऑपरेशन नहीं करने का सजेशन देते हैं, और अगर बहुत अधिक तकलीफ हो और बहुत जरूरी हो तो कुछ केसेस में हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि थैली का ऑपरेशन करें। कई बार मुझसे ये भी पूछा जाता है कि एक स्कूल में, स्पेशल स्कूल में बच्चे कभी कभी एक दूसरे को छू लेते हैं. In a special school, sometimes children may touch each other. You may have older children that probably may engage in some kind of physical activity which may be slightly sexual. These things can happen in a special school. ये बहुत जरूरी है कि स्पेशल स्कूल में बच्चे कभी एक दूसरे को छुए, एक दूसरे के करीब आए, और ये बॉयज और गर्ल्स दोनों में दिखते हैं, लड़का लड़की दोनों में दिखते हैं. At this time, I always tell parents, please understand, all your children are special. ये बात समझिए कि आप एक स्पेशल स्कूल में हैं, आपके सभी बच्चे स्पेशल हैं, और इस तरह की घटनाएं हो सकती है. आज किसी ने आपके बच्चे को छुआ है, कल कोई किसी को आपका बच्चा जाके छू सकता है. Today, someone has touched your child. It can happen tomorrow. Your child goes and touches another child. We have to all be united in this rather than fight with each other. I know very often I've had parents who've accused another parent that, your son has done this, your daughter has done this, and there are fights that happen. कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप जो है एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं कि आपके बच्चे ने ऐसे किया या आपके बेटी ने ऐसे किया. इस समय पे संयम दिखाना, टू शो अ लॉट ऑफ पेशेंस, इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम संयम दिखाते हुए एक दूसरे को समझे, ये बहुत जरूरी है. It's important that while showing a lot of patience, we understand each other, because these kind of incidences will keep happening in a special school setup. And we have to be open to the fact that these incidences do happen. And there's nothing really to sort of, worry and get upset and bothered about these incidences. Many a times I've had people who have also come to me and told me that, do we have some kind of medication or hormonal therapy that can be given to children so that they do not develop sexual feelings. मुझसे कई बार लोग पूछते कि कुछ दवाइयां है या कुछ इंजेक्शंस है जो हम स्पेशल बच्चों को दे ताकि उनके मन में ये भावनाएं पैदा ही नहीं हो. ये बहुत जरूरी है समझना कि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे करें तो ये बच्चे के साथ गलत होगा. और साथ साथ में सेक्सुअल भावनाएं कम करने के लिए दवाइयों का देना मैं नहीं मानता हूं. बहुत कम केसेस में अगर अधिक भावना हो तो हम कभी कभी दवाई देते हैं. जनरली आई डू नॉट एडवोकेट मेडिकेशन टू रिड्यूस सेक्सुअल फीलिंग्स. It's only in very rare cases, if we have very hypersexual behavior,
or we have behavior where the child is overtly sexual, then sometimes in such cases we may advocate sometimes this little bit of medication to sort of reduce sexual behavior. But overall, otherwise, we do not sort of advocate medication as a treatment for this sort of sexual um, feelings. कई बार मुझे ये भी पूछा गया है कि जब हमारे बच्चे में इतनी सोच नहीं है तो वो ये सब सोच कैसे कर लेता है. I am often asked that a child does not have the cognitive ability to study. The child may not have the ability to think. How is it that he sort of thinks about all these things? मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि बच्चे में सोच की क्षमता कम है लेकिन ये सब भावनाएं उसके मन में कैसे आती हैं. There are certain things which are very natural. There are certain things which are very innate. And these feelings can come into a child. कुछ भावनाएं हैं जो बहुत ही प्राकृतिक है, कुछ भावनाएं हैं जो बहुत ही अनिवार्य है, आता ही है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. ये भावनाएं प्रकृति की तौर से आती है और ये भावनाएं हमारे बच्चों में भी आती है. इसमें हमें डरना नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट गेट स्केर्ड ऑफ सेक्सुअल फीलिंग्स. ये बहुत जरूरी है कि हम बिल्कुल भी इसमें चिंता फिक्र नहीं करें. वी डू नॉट गेट वरीड और एंग्शियस, and we will be able to find a solution to this. I'm very often asked, should sex education be done in special schools? मुझसे कई बार पूछा गया है कि सेक्सुअलिटी को लेके शिक्षण, सेक्स एजुकेशन क्या बच्चों को सिखाना चाहिए स्कूलों में, स्पेशल स्कूलों में खास करके. And I always say that yes, sex education has to happen in special schools. Special educators may have to be trained. We may have to have teachers who are Hello. Hello. I think he got disconnected. Okay. Sir, I think you got disconnected. Okay. So मुझसे कई बार पूछा जाता है कि क्या सेक्स एजुकेशन हमें स्कूलों में होना चाहिए या बच्चों को सिखाया जाना चाहिए. And I always say yes, sex education should happen, and it should also happen because teachers have to be trained to do it. It has to be an ongoing process. ये जो है ऐसी चीज है जो रोज हमेशा होनी चाहिए, एक रेगुलर होनी चाहिए. और कई बार हमारे बच्चों को वही बात 20-25 बार बतानी पड़ती है ताकि उनको समझ में आए. So children have to be told the same thing and again. So it has to be a daily process, and it works. It works very well. Small things told to the children go a long way. और खास करके अगर बच्चों को अपनी टीचर ने बताया है तो ये बात वो ज्यादा ध्यान रखते हैं. If the teacher tells them, it is registered a lot more. So it has to be happened. We have done sex education for children with autism. We have done sex education for children with intellectual impairment. We've also done sex education for children with visual impairment. कई बार हमने सेक्स एजुकेशन की क्लासेस हमने ट्रेनिंग दी है स्पेशल एजुकेटर्स को कि मंद बुद्धि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए ये किया गया है, ऑटिज्म के बच्चों के लिए किया गया है. और जिन बच्चों में देखने की क्षमता नहीं हो या कम हो तो कई बार ये चीजें भी की गई है कि उनको डॉल्स या मैनिक्विन्स या मॉडल्स के द्वारा उन्हें सिखाई गई है. किसी ने मुझे पूछा है कि सबसे अच्छा एज क्या है कि ये सिखाए. वी नॉर्मली स्टार्ट एट एन अर्ली एज विथ गुड टच एंड बैड टच. सही टच क्या है और बुरा टच क्या है ये हम कम उम्र में सिखाते हैं. कहाँ एक दूसरे को छूना चाहिए, कहाँ नहीं छूना चाहिए, तो ये चीजें हम कई बार सिखाते हैं. किसी ने मुझे ये भी पूछा है, डज अ चाइल्ड लर्न masturbation on his own or is there a need to teach him? Is it okay if a child does not masturbate till adulthood? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बच्चा हस्तमेतु masturbation खुद के लिंग के साथ खेलना ये चीजें खुद या
अगर एक लड़की हो तो अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ खेलना, उसको टटोलना खुद ही सीखती है, क्या उसे सिखाना चाहिए? मैं नहीं मानता हूं कि ये चीजें सिखाई जा सकती है। मेरा ये कहना है कि बच्चे ये अपने आप सीखते हैं, ये प्राकृतिक है। इज इट okay if the child does not masturbate till adulthood? Is it normal? मेरा ये मानना है कि हर बच्चे का अलग है। क्या किसी ने पूछा अगर बच्चा ये बड़े होते तक ये सब नहीं करे तो क्या नॉर्मल है? It's absolutely normal. There are some children who do it for the first time at 18, 19, 20. There are some children who do it as early as 10 and 11. कुछ बच्चे हैं जो 10, 11 उम्र में ये सब करते हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्हें समय लगता है ये सब करने के लिए, तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। किसी ने ये भी पूछा है कि डू वी रन सच क्लासेस एंड कैन स्टूडेंट्स रजिस्टर फॉर इट? इसमें मेरा ये जवाब है कि जनरली हम ये चीजें क्लासेस के माध्यम से नहीं पढ़ाते हैं। ये जो चीजें हैं ऐसे होती है कि बच्चा स्कूल द्वारा हम स्पेशल एजुकेटर्स को सिखाते हैं और स्पेशल एजुकेटर्स उन्हें रोज क्लास में अलग अलग माध्यम से इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। तो इसके कोई ऐसे कोर्स या क्लासेस, देयर आर नो कोर्सेज और क्लासेस बाय व्हिच यू कैन लर्न दिस। समवन हैज आल्सो आस्क्ड मी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैस्टरबेशन। अगेन आई विल से इसमें ऐसे कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। There is no frequency which is fixed. There are some children who do it on a regular basis. There are some children who do it once a month. There are some children who do it once a year. There are some children who do it twice a day. तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें कोई ऐसे कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। कुछ बच्चे दिन में 2 बार करते हैं, कुछ हफ्ते में 2 बार करते हैं, कुछ साल में 2 बार करते हैं। तो ये अलग अलग बच्चों पे निर्धारित है। A very important factor which is also important is when your children grow, who is giving them a bath? This is very important. जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो उनको नहलाना कौन कर रहा है? If it's a male child, preferably a male should be involved in the bathing process. If it's a female child, preferably a female should be involved in the bathing process. अगर बच्चा लड़का है, युवक है, तो एक आदमी उसे नहलाए तो बेहतर होगा। अगर लड़की है, युविका है, तो एक औरत उसे नहलाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ये भावनाएं छूने से, साबन लगाते समय भी उत्तेजित होती है। While applying soap, certain arousals can occur, so one has to be a little careful. I always also mention that even when the child grows bigger, it is important that they sleep next to the parent of the same gender. अगर बच्चा बड़े हो जाए तो जरूरी है कि वो अपने, अगर लड़की है या युविका है तो माँ के साथ सोए या बड़ी बहन के साथ सोए, अगर लड़का है तो बड़े भाई या डैडी के साथ सोए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है, पाया गया है, it's been seen many a times that in the night they may sometimes put their leg on the mother or touch the mother inappropriately, and these things do happen. कई बार रात को वो यहाँ वहाँ माँ को छू लेते हैं या बहन को छू लेते हैं, तो उस समय पे अगर सेम सेक्स पेरेंट हो पिता तो बेटर होगा। एक और सवाल जो आया है कि intellectual disability, marriage is allowed legally, and if he has autism or intellectual disability, does the law permit it? मेरा ये मानना है, I would say that there is no fixed rule here. The issue is not about legal permeability or legal permission. The issue here is about capacity and capability of the child. कई बार ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि legally allowed है या नहीं है। लीगली काफी चीजें शादी होना अलाउड है, लेकिन कैपेसिटी शादी को निभाने की, कैपेसिटी शादी की जिम्मेदारियों को समझने की, कैपेसिटी एक रिश्ते को बनाए रखने की, क्या बच्चे में है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वेदर द चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, form a relationship, capacity to develop a relationship, that's there. Someone has asked me if the parent is a single parent and the child is of the opposite gender, then how is it to be managed? अगर सिंगल पेरेंट है और बच्चा लड़का है, माँ के साथ है, तो कैसे मैनेज करें? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो बच्चा आप ही के पास रहेगा, आप ही के साथ सोएगा। द चाइल्ड विल बी विद द मदर, स्लीप विद द मदर, बी विद द मदर. You could have a caretaker to sort of bathe the child, but it could also be that yes, you'll have to be a little careful when you're sleeping next to the child. The moment you find there's some inappropriate behavior, you'll prevent it. कुछ भी अगर गलत हो रहा हो तो उसको रुकना जरूरी है। और नहलाने के लिए हो सकता है आप किसी को रख सकते हैं। My child has ADHD and he's trying to be without clothes and asking younger children to touch. How do we handle it?
बहुत जरूरी है ये कि अगर बच्चा ADHD है और वो कपड़े उतार रहा है, दूसरे को अपने आप को छूने को कह रहा है, तो उसे ये कहा जाए, बताया जाए, कभी कभी थोड़ा सा समझाया जाए, और अगर थोड़ी जोर की आवाज में उसे समझाना पड़े, वी हैव टू बी अ लिटिल टफ एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट दिस इज नॉट सपोज्ड टू हैपन, ये नहीं होना है। वो खुद अपने आप को छू सकता है, वो खुद चाहे जो करे, लेकिन किसी और को मजबूर नहीं कर सकता अपने आप को छूने के लिए। He can't force another child to touch him. Also, it can also happen that someone has also asked me that any guidance on how to stop a young kid publicly touching the private parts. अगर कोई बच्चा है जो प्राइवेट पार्ट्स को खुलेआम सबके सामने छूता हो, तो उसे कैसे रोका जाए। इस समय पे भी जो मुश्किल चीज ये है कि बच्चे को समझाना कि आपके शरीर के कुछ अंग है कि हम चीजों, बच्चे को मतलब रोक सकते हैं। कुछ अंग है जो आप ओपनली छू सकते हो, कुछ अंग है जो आप नहीं छू सकते हो। तो जो चीजें मना है वो मना है। थिंग्स विच आर नॉट अलाउड आर नॉट अलाउड, and you're not allowed to touch the child inappropriately. So these are things which are very important. ये भी जरूरी है समझना कि अगर बच्चे के मन में सेक्सुअल भावनाएं हो और कभी कभी हम उन भावनाओं को उसे व्यक्त करने का मौका नहीं दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ चाइल्ड विद सेक्सुअल नीड्स and you do not allow the child to masturbate or you do not allow the child to do what he wants, कभी कभी बच्चे को रोका जाता है कि वो हाथ नहीं लगाए, उसे मारा जाता है। At such times, the child can get aggressive, the child can get violent, the child can get irritated, he can get frustrated. कई बार बच्चे जो है उत्तेजित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, हो सकता है किसी को मारा पीटी पे आ जाए। It can also happen that किसी को जाकर छू ले, they may also go and touch someone inappropriately. Someone has asked how as a parent will we know that the child has some needs and are there any clues around it? एक माँ बाप होने के नाते हम कैसे समझे कि बच्ची की शारीरिक जरूरतें हैं? You will find that the child is more attracted to the opposite gender. You will find that the child is engaging in seeing some videos which are sexual. You may find that the child is playing a lot alone, touching the private parts, rubbing the private parts, doing all sorts of things that indicate there are sexual feelings, even hugging the parent excessively, kissing the parent excessively. Both parents, कई बार बच्चे जो है खुद को छुएंगे, हो सकता है बिना कपड़े के रहना पसंद करें, ये भी होगा कि माँ बाप को ज्यादा गले मिले, छुए, ये सब चीजें जो है तो ये इम्पोर्टेंट है। मुझसे ये भी पूछा गया है कि हाउ डू यू क्रिएट अवेयरनेस इन द चाइल्ड अबाउट द प्राइवेट पार्ट दैट इट्स सपोज्ड टू बी प्राइवेट एंड नॉट शोन। सिंपल सी बात है, एज आई टोल्ड यू, द चाइल्ड इज टोल्ड दैट देयर आर 4 body parts, the lips, the chest, between the legs and the bum, where no one is supposed to touch him, and he's not supposed to show those parts, and neither is he supposed to allow others to touch him, or he is not supposed to touch anyone else. बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि शरीर के 4 अंग है, आपके होठ है, आपके छाती है, आपके पैरों के बीच में और आपके पीछे बाजू, जहां आप किसी को न छुओगे न कोई आपको छू सकता है। Once you explain that to the child, he has to learn that these parts are to be exposed only in private. I remember when we conducted a training for special educators and they went and taught their children this. We had many children who would not even allow the parents to touch those parts while giving them a bath. So then we had to incorporate that into the program that no, when your daddy gives you a bath, it's okay for him to touch those parts. So children learn. बच्चे इतनी अच्छी तरीके से सीखते हैं कि कई बच्चे ये सीखने के बाद उन्होंने माँ बाप को नहाते समय भी वहां साबुन लगाने नहीं दिया कि नहीं, यहाँ छूना अलाउड नहीं है। तो हमें फिर उनको दूसरे दिन सिखाना पड़ा कि नहीं, कोई और अगर आपको छुए तो गलत है और ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। Someone has asked me, children with autism have a problem in expressing these sexual needs. So should there be a way to teach children with autism? Autism के बच्चों को कई बार जो है तकलीफ हो जाती है एक्सप्रेस करने में। सो आई थिंक अ गुड occupational therapy setup, aqua therapy setup, some help would help in sort of channelizing these energies. You really can't teach a child to express these needs, but rather you have to wait and watch for signs and symptoms कि these needs are coming up or not. किसी ने मुझे ये पूछा है कि मेरे बेटे को बाहर जाने से लेडीज ग्रुप है तो वहां बैठना चाहता है, वो एजेड है तो उसको हम कैसे हो या यंग, उसको हम कैसे हैंडल करें, एंड
how early can we expect sexual awareness in the child? Well, अगर बच्चा, कई बार हम देखते हैं कि ऑपोजिट जेंडर के ग्रुप में बैठना, लड़की हो तो आदमियों के साथ बैठना पसंद करते हैं, अगर लड़का है तो लेडीज के साथ बैठना पसंद करते हैं। ये जो है एक सेक्सुअल भावनाओं का मार्कर है कि ये चीजें हैं। तो इसमें मनाई हमको ये करना है कि वो ठीक तरीके से बैठे, किसी को छुए नहीं, ज्यादा उत्तेजित नहीं हो, ये चीजें। द चाइल्ड हैज टू सिट प्रॉपर्ली, not touch anyone. This has to be taught. Social appropriateness, सामाजिक तौर पे सही तरीके से रहना, उसको सिखाना जरूरी है। Someone has asked me how early can sexual feelings develop in a child? कितनी जल्दी, किस उम्र तक सेक्सुअल भावनाएं बच्चों में आ सकती है? Normally we have seen it come up by around 8 or 9 years earliest. We have not seen it before that. हमने 8-9 उम्र में देखा है, उसके पहले नहीं देखा है। तो जनरली इट कम्स अप बिटवीन द एज ऑफ 11 and 14, 11 से 14 उम्र में ये सब भावनाएं आती हैं। Someone has asked me, if the child does not know about sexual needs, for example if he is bedridden, then is it okay to just leave it? I totally agree. अगर बच्चे के मन में भावना नहीं है और बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, ना ही कुछ व्यक्त कर रहा है, तो हम उसे एक्स्ट्रा चीजें सिखाए, ये जरूरी नहीं है। If the child is not engaging in any sexual behavior, he's fine, he's not sort of expressing needs, there is no need for us to sort of go and teach him anything which is, not needed or extra that the child doesn't need to, probably do. What should be done if the child is having sexual needs? Well, I think the child has to be told that, you have some alone time in the bathroom. You can play with your private parts if you want. You can apply soap on them if you want. You can clean them if you want. And he's given a little bit of me time to sort of explore himself. And I think automatically nature will take care of the rest of the things. बच्चे को अपने आप रहना सिखाना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए कि अगर आप थोड़ा खेलना चाहते हो अपने आप से, ये सब ठीक है, लीव हिम अलोन, और प्रकृति जो है अपना काम करेगी। आपको उसमें ज्यादा कुछ बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा है कि मेरा बच्चा 5 साल का है और जब वो ज्यादा एक्साइट होता है तो प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ के जंप करता है। ये कई बार हमने बच्चों में देखा है। वी हैव सीन दिस, अ स्मॉल चाइल्ड who's 5 years old gets excited, holds the private parts and jumps. ये कई बार हमने देखा है और ये एक नॉर्मल चीज है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बिहेवियर यू नीड टू बी वरीड अबाउट। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, वो समय के साथ अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। इट विल गो ऑफ ऑन इट्स ओन। देयर इज नथिंग मच टू बी डन in that regard. Also a very important thing is that there are two aspects. One is we have to protect our children against abuse, which is what is the worrisome part. हमें बच्चों को शोषण के प्रति सुरक्षित रखना जरूरी है, बट साथ साथ में हमारा कर्तव्य ये भी है कि बच्चे गलत फहमी में किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाए। This is also important that our child should not do any harm to someone else in their excitement. अपनी गलत फहमी में किसी और को तकलीफ न दे, ये भी बहुत जरूरी है। There are a lot of myths related to sexual behavior. A lot of people feel that sexual behavior is not necessary and it is evil and it is sinful. कई लोग मानते हैं कि सेक्सुअल भावनाएं गलत है और ये जो है एक पाप है और गलत चीजें है। I always say that religion is very important and I respect all religions. धार्मिक भावनाओं की मैं हमेशा कदर करता हूँ, लेकिन धार्मिक भावनाएं सही हो ये बहुत जरूरी है। It shouldn't happen that you look at sexual behavior as something which is hurtful, sinful, wrong and punish the child. बच्चे को हम की सेक्सुअल भावनाएं को गलत या पाप के तरीके से देखना गलत है और उसे ये समझाना कि ये पाप है ये भी गलत है, तो हम ये नहीं करें। Someone has asked me that should sexual awareness in a male child be communicated by the father? I have a take here that sexual awareness has to be conveyed by the parent with whom the child has the biggest rapport. जिसके साथ बच्चे की ज्यादा बनती हो, जिसके साथ बच्चा जिसकी ज्यादा सुनता हो या सुनती हो, उसके साथ ये भावनाएं एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, उसको समझाना जरूरी है ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो, बच्चे को एक सुकून महसूस हो, एक आनंद महसूस हो, एक कंफर्ट महसूस हो, एक आराम महसूस हो इन भावनाओं को व्यक्त करने में। किसी ने मुझे पूछा, इज सेक्सुअल अ प्रॉब्लम? वेल, people look at it as a problem. It's normal.
People look at it as an issue. It's normal. I use the word issue because I get patients that come to me and say, I have sexual issues with my child. I have sexual problems with my child. It's a very natural phenomenon. ये बहुत ही natural phenomenon है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, प्राकृतिक है. Someone has asked me that seeing the siblings get married, my child wishes to get married, and how do I sort of manage it in such cases? ये बहुत जरूरी है समझना कि ये भावनाएं कई बच्चों में आती है. कई स्पेशल बच्चे ऐसे जो ये व्यक्त करते हैं कि मुझे बीवी चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे शादी करना है. तो ये कई चीजें देखी जाती है. It's important that children have to be told that yes, we'll see later, postpone it, they can be diverted. They have to be explained about, that marriage may or may not happen. So that's something which could be done. Someone has asked that how do we control, at what age should we give a bath? Should the male parent give a bath to the child? The child is 5 years old. I think you can start by around 8 or 9. There's no hurry to do it. 8-9 साल के बाद बच्चे को अगर सेम जेंडर का पेरेंट न लाए तो बेटर है. Someone has asked me, what about postponing periods for a girl in a 10-year-old with ASD? अगर 10 साल का बच्चा है ऑटिज्म का, तो क्या उसमें महीना हम postpone करें, महीना बढ़ाने की दवाई हम दे, या महीना नहीं आए ऐसे दवाई दे? My answer simple is that no, there is no need to do that. Let the periods come when they come. महीना जब आना है प्राकृतिक तौर से आए, उसमें हम कुछ भी नहीं करें. My son is 11 and I haven't seen anything. Do I prepare him for the future? मेरा बच्चा 11 साल का है, क्या उसे हम आगे के लिए प्रिपेयर करें? आंसर ये है कि जैसे जब होगा, whenever things happen, we prepare him. We cannot prepare him in advance. As things happen, we prepare him. Someone has asked, should a disabled person not get married? As I said, the answer is not yes or no. The answer varies case to case. ये एक व्यक्तिगत जवाब है कि क्या डिसेबिलिटीज का बच्चा शादी करे या नहीं करे. ये व्यक्तिगत है, ये हमें परिवार से परिवार देखना है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है, हम ऐसे जवाब नहीं दे पाएंगे. Someone has asked, does a child's sexual behavior settle by around 19 to 20 years of age? There are some children who settle. There are some that it continues lifelong. There are some children where it starts at 18. तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जहां 19-20 साल तक ये बिहेवियर सेटल होता है. कुछ बच्चे ऐसा है जहां ये सेटल नहीं होता. कुछ बच्चे ऐसे हैं जहां 18-19 साल में ये शुरू होता है. तो it varies. Sex has always been a taboo subject, and this leads to physical force to stop the act. I totally agree. But it's important that we speak about it and break barriers. Sexuality के बारे में लोग कम बात करते हैं, but हम बात करें, व्यक्त करें और इसके प्रति जो शर्म है उसको निकाल दें. किसी ने पूछा है कि उनका बच्चा है जैसे ऑटिज्म है और वो कुछ एडल्ट चीजें टीवी पे देख रहा है या किताबें पढ़ रहा है, तो क्या ये सही है? There are many children who see this, do this. They read books, they read adult content. It's very normal, but it's important that we see that they behaviorally don't do anything wrong after that. इसके बाद वो कुछ गलत चीजें नहीं करे, ये बहुत जरूरी है देखना. लेकिन ये चीजें देखना, पढ़ना बिल्कुल ही प्राकृतिक है. How do we teach kids with ASD about puberty, trusting relatives, sexuality, etc.? Well, I think the special educators need to be trained and they can very easily teach the child. You need to teach him few people who he can trust. अगर बच्चा ऑटिज्म का है तो उसे हम समझाएं कि कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जिस पे वो विश्वास कर सके. हम शारीरिक तौर पे थोड़ी बहुत उसको हम सिखा सकते हैं, बट स्पेशल एजुकेटर्स का भी इसमें रोल है. As a 7-year-old ASD girl feels good to touch the opposite gender, how do we avoid? ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर 7 साल की बच्ची है और वो किसी को छुए, हाथ लगाए, तो ये बहुत जरूरी है कि 7 साल की बच्ची जो है वो कई बार सेंसरी तौर पे, इट्स ऑन अ सेंसरी नीड दैट दिस इज बीइंग डन. गुड ऑक्यूपेशनल थेरेपी वुड सॉल्व द प्रॉब्लम. I have a 9-year-old son who rubs his private part against the bed almost every day. Is it normal? Should we stop him? I think as long as there's nothing untoward happening, there's no need to stop him. But if you find that there's a discharge and the bed is getting dirty, then obviously you need to find some alternative. अगर बच्चा प्राइवेट पार्ट्स को अपने बिस्तर पे रब करे तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, बट अगर उसके कारण बिस्तर गंदी हो रही हो तो बच्चे को रोकना और कुछ ऑल्टरनेटिव देना, कुछ और चीज देना जरूरी है. Is there any harm in masturbating?
नहीं, खुद के प्राइवेट पार्ट्स के साथ खेलना, हस्तमेतु करने में कोई गलती नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है, बट इट हैज टू बी विद इन लिमिट्स. लाइक यू कैन नॉट हैव अ चाइल्ड हु इज मैस्टरबेटिंग 30-40 टाइम्स अ डे. ये भी नहीं हो सकता है कि बच्चा 30-40 बार दिन में ये सब चीजें करे, तो फिर उसे हम कंपल्सिव मैस्टरबेशन कहते हैं, जो एक बीमारी बन जाती है, which becomes a disorder, and then that needs to be treated. So this is something that I think varies. So there's no harm at all in probably engaging in this kind of behavior. We are conducting a survey which I spoke to SNIC Rehab about, that where we are conducting a survey on sexual feelings and sexual behavior and the awareness about it in parents, particularly of adolescent children. हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि बच्चों में सेक्सुअल भावनाएं क्या है. इसमें आपका नाम, बच्चे का नाम कुछ भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ आपकी राय मांग रहे. और इसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे के सेक्सुअल भावनाओं को लेकर क्या मतभेद है, क्या सोच है, अब कितनी मात्रा में ये देखी जाती है, क्योंकि ऐसे कोई भी रिसर्च कभी भी की नहीं गई है हम इन बच्चों में. क्वेश्चनर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि क्वेश्चनर ऐसा है कि आप भरे, क्योंकि आप भरोगे तो ही कहीं बच्चों को, कहीं माँ बाप को इसका हल मिलेगा. अगर आप नहीं भरोगे तो हमें भी जानकारी नहीं मिलेगी, न हम आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे पाएंगे कि लोगों के मन में क्या है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस क्वेश्चनर को भरे. इसका लिंक मैडम हर्षाली शायद शेयर करेगी, आपके साथ ग्रुप्स पे भी शेयर करेगी, और अभी यहाँ पे भी शेयर किया है. तो मैं चाहूंगा कि आप इस लिंक को कट पेस्ट करें और आपके पास रखें. मैं मानता हूं कि क्वेश्चनर बहुत बड़ा है, मैं मानता हूं कि समय लगेगा, मैं मानता हूं कि बट थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिए, क्योंकि क्या है, फिर हम अगले वर्कशॉप कभी भी करेंगे तो आपको बता सकते हैं कि लोगों के मन में क्या राय है, व्हाट इज द थॉट्स ऑफ पीपल, and what is wrong and what is right, we can tell you. So I would request you to fill the questionnaire. मैं मैडम से ये भी कहूंगा कि आप मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिए चैट में, क्योंकि क्या है कि अगर filling the questionnaire, if you, my email id and number is here, if you have face any problem, please let me know, so that I will be more than happy to help you. Also, if you want a Hindi version of this, or you want a Marathi version of this, I'll send it to you, but the Hindi and Marathi is very pure, even I find it tough. So you may find the English version easier to fill, but still, if you feel you want a Hindi or Marathi version, you can definitely email me and I'll be more than happy to probably do it. A very important thing that I want to convey to all of you is that we all have special children, and sexuality is not something we have to run away from. We have to fight it. We have to break barriers. My number has been put up, 9820696828, and my email also, so you can please note it. We have to break barriers. I know it's very difficult. I would say that all parents can fill it, but I would prefer if parents of children who are older fill it, because you would then find more meaning in the questionnaire. जो questionnaire है, अगर 10 साल से ज्यादा के उम्र के बच्चे के माँ बाप भरे तो उसमें ज्यादा आपको समझ होगी और आप समझोगे मैं क्या पूछ रहा हूँ. छोटे बच्चों के माँ बाप को जानकारी जरूर होगी, बट आप उससे गुजर नहीं रहे हो, तो उसको भरने में आपको लगेगा कि ये सब तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे भरूं. तो ये थोड़ा सा आपको शायद महसूस हो. The thing is, we have to break barriers. I'll tell you, I have visited special schools all over India. मैंने पूरे इंडिया में स्पेशल स्कूल्स में मैं गया हूँ, मैंने देखा है. और चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, all everywhere we have seen the same issues. The issues are the same. I have been to other countries, the issues are the same. And let me tell you, sexual issues are never expressed anywhere. Sexual issues are never talked about anywhere. जो सेक्सुअल भावना है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई भी अपने आप को व्यक्त नहीं करता. We are now in the middle of a third wave of COVID probably. So we really don't know where life is going to take us, how we are going to go. But one of the things which I would probably request SNIC, and we should probably do in the long run, is probably have an entire conference on sexual issues. And if we have a specific conference on sexual issues where we call a gynac, we call a hormonal specialist, we call different people
you will find there are so many things that come up, you know. Or ye jo hai, this conference, I would, you know, probably wait till say December or January to do it when things are better. And you know, if we can do it in a hybrid mode, partly physical, partly online, partly offline, it would be very nice. But we'll wait and see. If nothing else, we'll do it online like SNIC had done their other programs. But this is something that we must do because I feel it's important. So that's one. But beyond that, I just want to tell all of you that we all say our special child is as human as we are. हमारा जो special बच्चा है वो उतना ही इंसान है जितना आप हो और मैं हूँ, वो उतना ही मनुष्य है जितना आप हो और मैं हूँ, तो उसकी भावनाएं भी उतनी important है. His feelings are equally important. So we need to respect those feelings. Someone has asked me that some kids do get molested. What do we do? किसी ने मुझसे पूछा है, कुछ बच्चे हैं उनके साथ यौन शोषण होता है, रेप होता है, गलत चीजें होती है, हम क्या करें? खैर उनमें फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उनको सुरक्षित रखना जरूरी है. कभी कभी हमें लीगल एजेंसीज और पुलिस की भी मदद लेनी पड़ती है. वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ द लीगल एजेंसीज एंड पुलिस, बट दैट नीड्स टू बी डन. ये बहुत जरूरी है कि व्हेन दिस हैपेंस we need to probably look into it very seriously. There is a Sexual Offences Act which protects these children. We need to file a complaint against all that. मैं आखिर में आपसे यही कहूंगा कि सेक्सुअल भावनाएं से दूर मत भागिए. Do not run away from sexual feelings. See, India is a country where sexuality as it is not discussed. Sexuality वैसे भी हम कम बात करते हैं. कभी नहीं होगा कि हम नाश्ते के टेबल पे या खाने के टेबल पे सेक्सुअलिटी की बातें करें. ये चीजें नहीं होती हैं और हमें हमेशा बोला गया है कि ये चीजों के बारे में बात नहीं किया जाता है. वी हैव ऑलवेज बीन टॉट दैट, यू नो, वी आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स. But for your special child, it's important that as special parents, I always say you all are special parents because it's a very difficult task that you all are doing. So it's important that you all get together and talk about this. I mean, this is something where, you know, the more you share and the more you tell people कि मेरे बच्चे के साथ ये हुआ, मैंने ऐसे किया, I did this, we'll all learn from each other. You know, there may be some innovative approaches which even I haven't thought of, but you may have done and it may have worked. So, you know, that is something which, you know, probably works and, you know, will work ahead. So this is something which, you know, could go a very long way and it would be, you know, very helpful in sort of helping us. I still have time. If there are, I mean, a few more questions, I will take them. We have another 10 minutes left. So if there are any questions, I will definitely want to take them. So please send me those questions. But the whole aim was, see, we've not gone into details. It's, you know, details would need a long program, but we've, you know, we've just thought of, you know, giving you an overview, sensitizing you. आपको थोड़ा जागरूक करना इसके बारे में, ये हमारे सेशन का मकसद था. Someone has said they have a child who touches the private parts of the same gender. बच्चा है जो किसी दूसरे बच्चे के, मतलब लड़की है तो लड़की के ही प्राइवेट पार्ट्स को छूती है. ये भी मना करना चाहिए, हमें ये अलाउ नहीं करना चाहिए. We shouldn't allow this because there are certain things which are not to be allowed. Like I said, there are body parts which are not to be touched. ये हम बच्चे को सिखाए, ये बहुत जरूरी है. So this is something which we are sort of working on and doing. But I feel, and this is something which is, you know, never spoken about. I mean, I want to tell you this, that I remember around 2 or 3 years, not 2 or 3 years, rather 2015, I had conducted a seminar on sexual issues in developmental disabilities. And at that time, I had a lot of parents who told me that, you know, don't you think that by explaining all this to our children, they will go and learn and experiment. मुझसे माँ बाप ने कहा था कि अगर हम बच्चे को सेक्स एजुकेशन दे, हम बच्चे को सेक्सुअलिटी के बारे में शिक्षण दे, तो हो सकता है उनको ज्ञान मिले और हो सकता है वो जाके कुछ गलत करे जो शायद वो पहले नहीं जानते थे. And my answer there was that you only empower through education. हम लोगों को सिर्फ मजबूत बनाते एजुकेशन द्वारा. हम किसी को गलत रास्ते पे जाने को नहीं कहते. We never explain to people to go on the wrong path. Experimentation always happens. बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करेंगे अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए. To solve their curiosity, they will always go and do something, and you really can't do anything about it. Should children see sensitive scenes on TV? Well, I think you can be there and explain to them
while something is happening. अगर कुछ हो रहा है तो बच्चे को समझाइए कि किस बुरी बात नहीं है, बट किसको किस करना, कहाँ किस करना, कैसे किस करना, ये चीजें जो है बच्चे को समझाना जरूरी है. किस जो है प्यार का एक एक्सप्रेशन है. इट्स ओनली अ मेथड टू एक्सप्रेस योर लव. इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्लेन. Pornography is increasing. I totally agree. We have to just curb use. We really can't do much about it. It's available freely. Someone has asked me that they have a 43-year-old girl with MR who takes an interest in male friends. It's very normal. ये बहुत नॉर्मल चीज है कि अगर 43-year-old की लड़की है मंदबुद्धि की और वो जेंट्स के प्रति आकर्षित होती है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है. तो थोड़ी बहुत आकर्षण ठीक है, फिर भी हमें उसे सुरक्षित रखना जरूरी है. बट उसके अलावा ये आकर्षण बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं मानता हूँ. दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड से. Does sexual behavior vary according to the type of intellectual disability? सवाल यह है कि अगर बच्चे की बुद्धि मात्रा के अनुसार क्या उसकी सेक्सुअल बिहेवियर चेंज होती है. हमने ये देखा है कि जो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी IQ 55 55 से 70 उम्र के माइल्ड MR, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन show of course a little more sexual behavior than moderate MR and severe MR. Moderate and severe intellectual disability and moderate and severe ID children show slightly less sexual behavior because they don't have the cognition. उनमें वो सोच की क्षमता नहीं है कि क्या करे कैसे करे, तो सेक्सुअल बिहेवियर कम दिखती है. बट माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ज्यादा पाई गई है. प्रोफाउंड में बहुत कम पाते हैं. प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम बहुत कम पाते हैं. सो इट वेरीज ऑफ कोर्स डेफिनेटली विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, देयर इज नो डाउट. Sir, one question is privately asked that can they be allowed to watch pornography in laptop while classes is going on? How much monitoring can be done? If we take away, they get aggravated. So it's very important that if classes are going on, then it has to be under supervision. अगर क्लासेस हो रहे हैं तो आपको वहां रहना है, ध्यान रखना है, चलते फिरते रहना है, कमरे के अंदर बाहर जाना है, देखना है कि क्या हो रहा है. It's not about seeing pornography. It's about when, how and where. कहाँ देख रहे, किस तरह से देख रहे और कब देख रहे. तो अगर वो लंच करते समय पोर्नोग्राफी देखना चाहे तो अलाउड नहीं है. अगर वो क्लास अटेंड करते समय पोर्नोग्राफी देखे तो अलाउड नहीं है. कभी कभार देख ले और खुश रहे तो कोई बुरी बात नहीं है. बट द थिंग इज, अगर दिन में 4 घंटा पोर्नोग्राफी देखना चाहे तो वो भी गलत है. So it's about how and how much and where and what that matters more than about allowing or not allowing. Yes, they do get upset and irritated, but sometimes if they are doing the wrong thing, you have to show them what the right thing is. Do high functioning ASD adults have sexual issues? I think every human being has sexual feelings. हर इंसान में sexual भावनाएं हैं. तो high functioning, low functioning, middle functioning, all groups show sexual behavior. So there is always a question. It comes to me like from some families, like can we take the external help to satisfy their child's needs? Yes, I will answer that. मुझसे कई बार पूछा जाता है कि क्या हम कुछ प्रबंध करें कि इसका सेक्सुअल भावनाएं पूरी हो सके. और मैं हमेशा कहता हूं कि आप कितनी बार प्रबंध कर सकेंगे. How often will you be able to do this? You know, how will you decide? Are you going to decide once a month? Are you going to decide once a week? Are you going to decide? It's difficult. If you get a child with ASD जो आपको कहे कि मुझे रोज चाहिए, तो आप क्या करोगे? Because children sometimes get attracted to these things. बच्चे आकर्षित हो जाते. Then what do you do? जो प्राकृतिक है उसका इस्तेमाल कीजिए. What is natural, let it happen. Do not try and expose the child to what is not needed. ये बहुत जरूरी है. Someone has asked me about a book on sex education. Well, I am writing with my colleague Alisha Lalji a book on sex education, which is going to come out very soon. We plan to come out with it in English and Hindi to start with, and then probably other languages. It's still in process. We have finished the manuscript. It's very well written. She has contributed a huge part to it. I have written some part of it. But the thing is that we are waiting for COVID to finish because we want to release it physically. We don't just want to release it online. So we're waiting for COVID to finish. Probably we will release it when the time is right.
it will be available online. We don't intend to earn a lot from it, so it's not going to be an expensive book at all. It may be a book that costs in the range of 50 to 100 rupees or 200 rupees, which is very affordable. So everyone can buy it and use it and there. So when it comes out, yes, you would know. I think SNIC would be informed, you all would be informed, and then at that time we can see, how it goes. I think we have around 5 minutes more. So if there are any questions, we can take them up. Otherwise, we'll wrap up. I'm very thankful that we've had over 90 or 100 parents at one time on a Wednesday evening, which is, a working day evening. So, and I've had both parents, I've seen both parents in the camera sit. So that's, I'm very happy that they've taken the time out to come. Don't forget me, more importantly, don't forget my questionnaire. So do fill it. That's important. So, and once we probably do that, then we will, probably have more sessions on this. See, there are some specific issues with the girl child we may take up separately. There are multiple things. But we didn't want to, go into too much of details. Sort of today, we just wanted to give you an overview about things. Can you please do a webinar where you demonstrate how to teach kids? Well, I think, see, I'll tell you, it's very difficult to, do this in an online medium. I would not mind teaching special educators and parents in a workshop, but to do this in an online medium is very difficult, because it would, the essence of the workshop is lost. I mean, I know it's important, but we would wait for a post-COVID era to probably come back where we can do this, so because I would need to show you some charts, I would need to explain to you, and the camera, like you see, my hand movements are not very clear. It would be a little difficult for you to follow in an online medium. Actually, sir, in our culture, many families are like, they even don't know that, okay, masturbation and everything is normal. Correct. काफी मॉम्स मेरे पास आती है कि यार ये बिल्कुल ठीक नहीं है ना, ये करने नहीं देना चाहिए. So this kind of things, awareness is more necessary in families. Like some families are very well educated and open, but in some families, even husband and wife cannot talk about it. If wife talks about it, husband is like, ये क्या बात कर रही हो? Why you are talking about, like, this is nonsense. We should not talk about it. अपने बच्चे. So this is very, I mean, I'm getting those kind of questions from families. Yes, yes. So I totally agree with you. I totally agree that it's a taboo topic, and very often I remember when I started doing these workshops in Bombay. I mean, I once had a grandparent who came and told me that, don't you think you're overdoing it, and there's no need to sort of do this, and all this kind of things. And then when he saw that the parents were attending and the difference that it made to the child, he came and said, "Nee, it's a good thing, that you sort of did it." Someone has asked me, how do we help a child that is going to start her periods? The answer here is, I think you have to have a session where you teach children about a pad, what a sanitary pad is, how it is to be applied, make them practice it again and again, teach them period care. Maybe you can use a doll to explain to them washing of the private areas and multiple other things, and care during a period. You could take the help of any special educator. Any lady can do it. It's as simple as that. It's not that you need a doctor to do it. Any lady who knows to manage herself can do it. A mother can do it. An elder sister can do it. You don't need to have a doctor teaching it. A special educator can very easily do it. So also, what is important is show them a pad soaked with red color. Show them how it is going to look, so that they don't get scared when they're seeing it. Show them what a full pad is, what an empty pad is, the heavy and the lightness. The difference is what they have to sort of understand, and how to discard a pad. That's very important, because many of the children do not know how to discard a pad. So that's important, that they have to know how to apply a pad, discard a pad. Those are things which they have to know. I even go to the extent that sometimes special children have to know how to go and even buy a pad from a chemist, because sometimes if they are in a situation where they need it, they must know how to just purchase it, at least from a chemist. And generally, children above the age of 13, I tell the parent, keep a packet of pads always in their bag, because you never know when they need it, when another child needs it. So it's always better to keep it.
some more question, I think. Is it possible? Yeah, someone has asked that, I told you already that we do not need to stop periods. Consenting adolescence in the questionnaire primarily means is, do you think that the child has the capacity to say, yes, I want to be in a sexual relationship? Can a child with intellectual disability say that? Someone has asked me, does a girl need to remove her pubic hair? Well, I think boys and girls both need to maintain hygiene. So shaving off their pubic hair to maintain hygiene is very essential. And that is something which boys could be taught, girls may need help with. So I think the male parent and the female parent could take the lead in this and, ensure that hygiene is sort of maintained. So, I mean, see, there are no rules about whether it's needed or not, but if it is removed, it is always better for hygiene. Actually, many moms have these issues like single mothers are bringing up boys. So there they find difficulties. No, I totally understand, but then there again, I mean, we could have a male special educator, that could play the role, or you could have a male member like the brother of the mother, or some relative of the mother who could play a role and explain to the child. It's very possible. It's not that, I mean, I'm sure there must be some male member who they know. It can't happen, that they don't know. Yes, sir. I think you have answered most of the questions, and any other questions? We are just, we can have a 2 minutes and then we can wrap up today's session. Yeah. Any other questions, parents? I guess सारे questions के answer बहुत से हमें मिल गए हैं sir से, and we can have more on this sessions on this to fill up the that form that will help in future. Whether you have a younger child or elder child, try to fill up this because it will teach you various things. I've seen those questions are very much relevant to all actually. Before Okay, I sir. go, I'll just say hello to Dr. Ashok Shah. I think he's in the audience. I've just seen him. I know him very well personally. He's a very famous doctor from Bombay. So, and Aditya, yes, hi Aditya, nice to see you. So, thank you so much. Yeah. Ashok Shah is, yeah. Oh, sorry, I saw. Okay. Yeah. Yeah. Even Ashok Shah sir now is in a advisory board of members. Sir. He's an advisory. Okay. So he's a great help to SNIC to connect. No, definitely. And in the doctor fraternity. Sure. No, definitely. Yeah. Thank you. I think we can wind up. I mean, and my email is there, so people can always email me if they have any other queries. Yeah. Yes, Dr. Avinash. Yes. This form you have sent, does it reach directly to you? After filling yes, it only comes to me. Yeah. Okay. Yeah. I mean, no one else has access to it except me. So don't worry. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, sure. Yeah, I think we can wind up today's session. Yes. We looking forward for this kind of session in future, sir. Thank you so much for taking your time, and it was really a good session. And I would say वो जो टैबू था वो काफी हद तक निकल गया है जो जिन्होंने अटेंड किया है. So that is a very nice thing happened today. With that, thank you very much, parents. We will wind up here. Thank you, sir. Yeah. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Good night.